Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will correct two sentences, and this is part 12. So our first sentence is, I neither saw him nor her. Now in this sentence, we have a conjunction that is correlative conjunction, neither. And neither always takes nor, right? And we should also remember that their position should be same. So neither je agya asake verb ai, I neither saw. The nor saw bhi verb lagan ghurje. I neither saw him nor saw her. Ya better you to know, I saw neither him nor her. So the correct sentence will be, I saw neither him nor her. ही जो correlative conjunction आए वो असां हिन object सां use कनासी because this nor is also used with the object. So nor अगर object सां use थियल आहे neither भी object सां ई गॾु use थियणी आहे. Now your sentence is correct. Second sentence is, tell me where are you going? We know that the phrases or clauses like tell me and please tell me, I don't know, he told me, he asked me. These phrases, whenever we use these kinds of clauses or phrases, we have to use an indirect question. असांजो जेको ही question आहे इहो ख़तमु थींदो, इहो indirect question थींदो, मतिलबु असांखे हिनखे assertive में चेंज करिणो आहे. जॾहिं बि टेल मी हुजे, जेको टेल मी आहे, आई डोंट नो आहे, प्लीज़ टेल मी आहे, इन्हनि क्लाज़िस सां असां कोई बि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ न कंदासीं, बल्कि असां हुनखे इंट्रोगेटिव खे चेंज करे असर्टिव करे छॾींदासीं. सो हिन सेंटेंस खे कीअं करेक्ट करे सघिजे थो, टेल मी वेयर यू आर गोइंग. हेल्पिंग वर्ब खे खणी करे असां हितां रखियो, सब्जेक्ट जे अॻियां रखी छॾियोसीं एंड सब्जेक्ट खां बाद में रखियोसीं. ही क्वेश्चन मार्क जेका हुआ रिमूव थींदी बिकॉज इट्स नॉट इंट्रोगेटिव, इहो असर्टिव सेंटेंस आहे. टेल मी वेयर यू आर गोइंग. अगरि हिते टेल मी न हुजे हा, हिन जॻह ते हुजे हा प्लीज़ टेल मी, त असांजो सेंटेंस थिया प्लीज़ टेल मी वेयर यू आर गोइंग, आर ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर यू आर गोइंग. इन तरीक़े सां इहे अहिड़ा क्लाज़िस हूंदा त असां हुन में इंट्रोगेटिव खे ख़तमु करे छॾींदासीं. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.